Hello, hello. Welcome to another episode of KG Physique. आज मैं I'm going to talk about एक cheat code जो I think almost एक या 2 साल से अभी it's in the market. मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ because it is YouTube has put a bit of a ban on it क्योंकि वो it's going through its approval stages by a company called Eli Lilly. So it's in its stage 3 trials at the moment, and there is a ban on using the actual name of it. Like I have used a nickname Rita, so we're going to go by Rita. Sounds very close to Rita, and I don't think YouTube can ban me for saying Rita, so we'll use that one. Anyway, I hope all of you are well. We're going to talk about fat loss. I'm in Melbourne at the moment, and it's बहुत ठंडी है आज, about 10-12 डिग्री है. Supposed to be summer, लेकिन होता है ऐसा मेलबर्न में एक दिन 30 डिग्री होती है, next day 10 degrees होती है, which is why I'm in my Bon Brown food sleeves. But anyway, so today I'm going to talk about RITA, GLP-3. Why is this such a phenomenal cheat code for fat loss? मैं खुद यूज करता हूँ 2 mg per week. बहुत ईजी है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, मतलब फैट में जाता है. सो और मैं एक्चुअली अपने पैर में लेता हूँ इन माय आउटर क्वाड. You just pinch the fat. बहुत सिंपल है. For people who don't know, you pinch the fat like this and you put the injection here. 6 mm का इंजेक्शन है, बहुत छोटा होता है. Anyway, बहुत easy है. 2 mg once a week, enough है. And I'm going to tell you how it works, why it's really beneficial, और honestly ये cheat code है fat loss के लिए, absolute cheat code. मैं 10 साल से competitive bodybuilder हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में. मैंने पूरा dieting, I've gone down to like 4%, 5%, 6% body fat, proper training set without all these things. लेकिन ये जो GLP-3 अभी that is coming out or actually is available but going to be approved for human consumption, it's such a cheat code कि dieting करना बहुत आसान होता है. And this is for me जो एक bodybuilder है, जो I have always been able to suppress my hunger and be disciplined and be fit. मुझे कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, but this GLP-3 जो available है, of course you should use it. अगर इजी बनता है डाइटिंग करना तो प्रॉब्लम क्या है उसमें, एंड स्पेशली अगर उनका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है. सो द ह्यूमन ट्रायल्स अभी चल रहे हैं. So far all the findings are really good. I'm going to go through all of it and link all the articles as well below and in the and on the video as we talk about it. But the key takeaway for everybody is this is something that we should embrace for people who are struggling to lose weight, because I think it is fantastic. मैंने हमेशा अपने वीडियोस में यही कहा है कि कोई ऐसा जजमेंट होना नहीं चाहिए. कोई अगर गियर लेता है, कोई पेप्टाइड्स लेता है, somebody struggling with weight loss या एक्सरसाइज करना, इट्स ऑल फाइन. हम लोग सबकी जर्नी, हम लोग सबकी ज़िंदगी अलग होती है. एंड ये इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिकग्नाइज कि सबके अपने अपने चैलेंजेस है, अपने अपने मोटिवेशन है. सो नो जजमेंट. तो अगर आप ये देख रहे हो ये वीडियो एंड इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर या आपको बॉडी बिल्डर बनना है, और इफ यू जस्ट वांट टू लूज वेट, दिस peptide is very beneficial and it is going to help you a lot. And it has been discovered to help people with weight loss, and people who are obese, people who have diabetes. And it's going to be a huge game changer. अभी तो बहुत common हो चुका है, at least ऑस्ट्रेलिया में. I don't know इंडिया में common है कि नहीं. I hope it is because it's really good. हम लोग को पता है इंडिया में डायबिटीज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है. It's I think what India is what the capital or diabetes capital of the world. The problem तो है ही, and this is definitely going to help. So why ये discover क्यों हुआ? आप अभी इंडिया में आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि GLP-1 तो बहुत टाइम से है. सो Ozempic, semaglutide, ये तो बहुत टाइम से है. आई थिंक 3 या 4 साल हो चुके हैं. तो GLP-1 क्या है? GLP-1 basically helps you suppress your hunger. मतलब आपका जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो it slows it down. So आप जब खाना खाते हो, it reduces the release of your gastric emptying, so you feel full of longer. मतलब ज़्यादा भूख नहीं लगती है. वो एक ही चीज़ है.
So how people lose weight on GLP-1s is that they don't eat enough food. उसमें problem क्या है? You will also lose muscle mass. If you don't eat enough food, muscle भी कम हो जाएगा, right? Because you're not getting adequate protein. लेकिन जो obese है और एकदम मोटे है, उन लोग का क्या फर्क पड़ता है? They just want to lose weight. तो मसल है, फैट है, उनको क्या पता है? अगर कोई इंसान है जो 5 feet में मेन की बात कर रहा हूँ, if you're say 5'9", 5'10" in height and you weigh 150 kilos, अगर आपका वेट 150 से 110 या 100 kilos वो reduces to 100 kilos, that's going to be beneficial. वो मसल है या फैट है, उन लोग को क्या पता? So that was where GLP-1s came out. लेकिन GLP-1s का problem क्या है कि as you start to reduce your calories, your body gets used to the low calories and it reduces your energy. मतलब एनर्जी नहीं है अगर आप खाना नहीं खाते हो तो हाउ विल यू हैव द एनर्जी टू डू थिंग्स, टू गो आउट, टू वॉक, टू काम पे जाते हो, ये सब यू वोंट हैव द एनर्जी. तो वो एक मेजर प्रॉब्लम था GLP-1s के साथ. फिर आया GLP-2. GLP-2s ट्रिजेपिटाइड. अभी GLP-2 का क्या था? दे हैड एन एक्स्ट्रा GIP receptor. तो GLP-1 was it stopped, slowed down your gastric emptying. GIP is, now I have to read this because I keep getting mixed up with this, but basically what GIP does is it's glucose dependent insulinotropic polypeptide. Basically it is present in your pancreas, in your adipose tissue, and in your muscle tissue. So what GIP signaling does, improves insulin response to meals. Also glucose uptake into muscle cells. So what that helps is it basically helps with nutrition partitioning. Through patio, it makes sure that you're using your carbs for energy and you're not storing it. So it partitions your nutrition properly to make sure you're using it using your carb sources and fat sources effectively now. So that's where tirzepatide came in, and that was the difference between tirzepatide and your GLP-1s. There are different names for the GLP-2s. In Australia, we call it tirzepatide. India में शायद कुछ और होगा, but I'm guessing it's tirzepatide as well. But basically, GIP improves your insulin response to meals, right? So it certainly adds to just gastric emptying. So slows down your digestion, but make sure what nutrients are using are actually used properly in your body. So two things. फिर जो GLP-3 आ गए, they added a massive game changer, and that is glucagon. So glucagon क्या है? Glucagon increases lipolysis, fatty acid oxidation, energy expenditure, and increases metabolic rate. So what that basically means in simple terms is कि ऐसा लगता है कि your body is exercising to a certain degree without exercising. So it helps you burn energy while you're not exercising. And that is a massive game changer. So now you've got 3 pathways in which to lose weight. So reduces your hunger. Now जो hunger suppression है वो थोड़ा कम है compared to GLP-1, but it's enough. ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. Unless आपको कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में, you don't need to, वो इतना suppression की जरूरत नहीं है जो GLP-1s में है. GLP-3s have enough suppression in it. And of course, dosage B, you can increase your dosage to if you want more appetite suppression. So you've got GLP-1s of decreased appetite. You've got your GIP, which helps with nutrition partitioning. And then you've also got with glucagon, where your body starts to burn calories more. So 3 ways in which your body is now fighting fat loss. So what were the results of this? So firstly, hua kya, like the reason that glucagon was introduced to the GLP was because of how good it is in signaling your body to burn fat for energy. That was the main reason. So iska kya hai ki when that happens, it has a positive effect on your liver, first of all. With the GIP, it helps with diabetes. So you've got better lipid scores. So it helps with your liver, helps with your cholesterol, and then also helps with reducing HbA1c or your blood sugar markers. So it's got 3 other added benefits to fat loss. Now, all those 3 things are directly related to people who are overweight. Agar aap obese hai, or you're overweight hai, not necessarily obese even, overweight hai, good chance कि आपके liver में problem है, good chance आप insulin sensitive है, and good chance आपको cholesterol is a problem है. So this helps with all those 3 things plus losing weight. अभी और एक दूसरा actually study किया था कि it also, actually no, this was tirzepatide.
Tirzepatide actually what it did कि GLP-2 it helped with people who had osteoporosis. So जिनका knee का problem होता था, knee or hips, if you had osteoporosis, it helps that. लेकिन उसका how did that happen? That basically happened because जिसका weight कम हुआ, जब भी आपका weight कम होता है, obviously it puts less pressure on your joints, on your knees, on your ankles, on your hips. So losing weight helped osteoporosis as well. अभी ये तीसरा जो GLP-3 है जिसका नाम मैं यूज करूंगा रीटा at this point, not the actual name तो सबको पता है, मैं रीटा यूज करूंगा. With Rita, it also helps with your joints as well. So there's multiple benefits with using Rita at the moment. अगर आपके पास कोई choice है ना, अगर आप बैठे और सोच रहे हो कि should I take a GLP-1, should I take a GLP-2, should I take Rita, मेरे हिसाब से Rita लेना चाहिए because it has all the benefits of 1 and 2 plus the added benefit of glucagon. And जब ये market में आएगा, it is going to absolutely kill it because सब लेंगे इसको. Like there is no reason not to take it. दूसरा क्या है, as you lose weight and as you improve your blood sugar level, it also improves your mitochondrial support in your body and your hypothalamus in your brain. So you start to think better as well. Think about it, जो लोग overweight है, you will generally notice a very sluggish, a very slow, सोचने में टाइम लगता है, कुछ भी करने में टाइम लगता है. Everything speeds up as you start to lose weight and as you when you eat a little bit less, you get a lot more clearer in your brain as well. वो brain fog नहीं होता है. You know, बहुत खाना खाने के बाद मन करता है you want to sleep, वो चला जाता है. You're just not going to get that desire कि मुझे बहुत खाना है. You know, कोई restaurant में buffet या किसी में जाने का मन ही नहीं करता है. तो मैं खुद का अपना एग्जांपल देता हूँ. मैं रीटा स्टार्ट किया what are we now, March, right? मैं स्टार्ट किया था फरवरी में, तो 2 महीना हो गए. आई एम ऑन 2 mg a week. जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ही दिन लेता हूँ, थर्सडे रात को लेता हूँ सोने के पहले. 2 mg इंसुलिन सिरिंज, वेरी इजी टू टेक. मैं मेरा खुद का जो मैक्रोज है, मैं 205 ग्राम्स प्रोटीन, 385 ग्राम्स कार्ब्स और 70 ग्राम्स फैट खाता हूँ इन स्प्लिट बिटवीन 4 मील्स. वो 4 मील्स के बीच में मुझे कोई भूख ही नहीं लगती है. और नॉर्मली मैं पहले क्या करता था, ये सब GLP-1 के पहले जब मैं कंपटीशन करता था और मैं ट्रेनिंग करता था, ऑन अ फ्राइडे वाज माय चीट मील. जस्ट सिर्फ रात को, फ्राइडे डिनर, पूरा दिन नहीं, सिर्फ रात को फ्राइडे डिनर वाज माय चीट मील. तो मैं एक्चुअली पूरा वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्रॉम देन आई वुड वेट कि व्हेन फ्राइडे नाइट कम्स एंड आई वुड फील लाइक ईटिंग. मुझे कुछ भी खाता था मैं तभी, पिज्ज़ा, डोसा, पानी पूरी, जो भी मिलता है यहाँ पे, इंडियन खाना, पनीर मखनी, जो भी है, बटर चिकन, जो भी है, मुझे दाल मखनी, छोले भटूरे, जो भी है, मुझे खाने का मन करता था. प्लस मैं चॉकलेट से सब भी खाता था, चॉकलेट केक, जो भी है, बट एक ही मील. तो एक डिनर और एक डिजर्ट, मील और चॉकलेट या मील या केक या जो भी है, बट 1 मील एंड 1 डिजर्ट. अभी क्या था, 2 महीने से वो क्रेविंग ही चली गई है. एक्चुअल क्रेविंग चली गई है. मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि मैं फ्राइडे नाइट में अपना डाइट ही मेंटेन करूं या कुछ और खाऊं, डजंट मेक डिफरेंस. नाउ मैं ज़्यादा कार्ब्स मैं खाता हूँ फ्राइडे. जनरली मैं लेग्स ट्रेनिंग करता हूँ ऑन सैटरडे. सो फ्राइडे आई गो बिट हायर ऑन कार्ब्स सो दैट आई हैव द एनर्जी टू डू लेग्स ऑन सैटरडे. तो मैं कार्ब्स में ज़्यादा खाता हूँ, आई डू. लेकिन वो पिज्ज़ा या छोले भटूरे, ये सब ये खाने का मन ही नहीं करता. एंड ऐसा नहीं है कि आई डोंट विल नॉट ईट इट एट ऑल. अगर मैं कहीं दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया और किसी ने कहा ओके लेट्स गो गेट पिज्जा, तो मैं खा लेता. इट्स नॉट दैट आई वुडंट. ऐसा नहीं कि इतना सप्रेशन नहीं है कि खाने का मन ही नहीं करता है, एब्सोल्युटली. लेकिन वो क्रेविंग चली गई है. एंड दैट इज द मेन थिंग कि व्हाट रीटा डज इज टेक्स दैट क्रेविंग ऑफ. दैट इज लाइफ चेंजिंग ऑनेस्टली. अगर आप कैन यू इमेजिन, अगर आपको हेल्थी खाना है एंड यू सी आपके सामने हेल्थी खाना है, और लेट्स से आपका दोस्त है यहाँ पे बाजू में समोसा खा रहा है और कुछ और पकोड़े खा रहा है, कुछ और खा रहा है, और आपकी बीवी, गर्लफ्रेंड, जो भी है यहाँ पे, दे आर ईटिंग समथिंग एल्स. एंड इमेजिन इफ यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड और बाकी जो खाना है यू डोंट फील लाइक ईटिंग इट. तो डाइट मेंटेन करना कितना ईजी होता है, कितना ईजी होता है. बिकम्स वेरी सिंपल कि वो मन ही नहीं करता है वो सब खाने के लिए, राइट? तो एंड जो आप डाइट करते हो, एज सून एज यू हैव योर प्लान,
वो प्लान को स्टिक करना बिकम्स वेरी इजी कि इट जस्ट बिकम्स ऑटो पायलट। एंड मैं क्या खाता हूँ, मैं एग्स खाता हूँ सुबह, या प्रोटीन शेक इधर, और फिश खाता हूँ, बैरामंडी खाता हूँ लंच के लिए, फिर चिकन और फिर सैमन। एंड जनरली मैं रोज़ यही खाता हूँ। सेम थिंग कार्ब्स के लिए आई हैव ब्रेड, राइस, ये सब है। फैट्स के लिए ऑलिव ऑयल, बटर, एवोकाडो, ये सब मैं खाता हूँ। तो ये मेरा जो मैक्रोज है ऑफ 200 ग्राम्स प्रोटीन, 385 carb, 70 fat stays within that. From the chicken, eggs, fish, bread, olive oil, avocado. That's how I get fruits and veggies, of course. That's how I get my macros. So वो खाने में कोई और कुछ खाने में मन ही नहीं करता। It you just feel like eating it, and it becomes so easy for you to stay lean. This is the cheat code. I'm telling you, this is the cheat code. अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए रीटा का, कहाँ से खरीद सकते हो, कितना लेना चाहिए, रीच आउट टू मी, मैसेज मी। मेरा इंस्टाग्राम है kg.physique, उस पर डीएम कर लो, आई कैन सेंड इट यू। बहुत ईजी है। ओ एक्चुअली साइड इफेक्ट्स की बात करनी चाहिए, वी मस्ट टॉक साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स है, देयर आर साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या होता है, एज यू स्टार्ट इनिशियली नोजिया हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मे बी, मेरे से नहीं हुआ। डायरिया हो सकती है, अगेन वेरी लो चांस, मेरे साथ नहीं हुआ। जो मेरे साथ हुआ इज व्हाट्स कॉल्ड डिस्टेसिया। मतलब आपका जो स्किन है, यू गेट अ वेरी स्लाइट बर्निंग सेंसेशन। ऐसा लगता है कि सनबर्न हुआ है, अगर आप धूप में बहुत टाइम यू स्पेंड टू मच टाइम इन द सन, ऐसा सनबर्न होता है। फील्स लाइक दैट, थोड़ा बर्निंग टाइप सेंसेशन, अजीब लगता है। पहली बार होगा, आई विल वार्न यू। मेरे साथ भी हुआ था, फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, फर्स्ट टाइम हुआ था। आई थॉट क्या अजीब है, लाइक मैं माय क्लोथ्स वर हर्टिंग, अगर मैं बस कपड़े स्किन पे टच करके इट वुड हर्ट अ बिट। तो मैं सोचा था ये क्या है, बट इट वाज मैसिव, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ट्रेनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्लीप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। The other issue that does happen is your heart rate will increase a little bit, ज़्यादा नहीं। So you must do your fasted cardio in the morning. मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा, I must do fasted cardio every morning. हमेशा, especially जो for men over the age of 35, every day, wake up, go for a walk, wake up, go for a walk, man, make it a habit. Um, but yeah, heart rate may go up a little bit. Um, so dystocia. Oh, and with RITA बहुत important है कि you must keep your carbs. You must eat carbs. Carbs खाना चाहिए. You must eat it. It uses carbs for energy. So अगर आप जिम जाते हो and you don't eat carbs, और आप रीटा पे हो, तो you will not get a pump. और जो जिम जाते हैं उन लोगों को पता है कि मैं pump की बात, what a pump means. Pump नहीं होगा. So make sure that you eat your carbs. जो भी आप राइस खाते हो, रोटी खाते हो, जो भी है, eat your carbs. जो कितना कार्ब्स खाते हो, दैट डिपेंड्स, आपका गोल्स क्या है, आपको बल्क करना है, लीन आउट करना है, जो भी है। अभी मैं जो रीटा ले रहा हूँ, आई एम डूइंग अ बल्क फेज। मैं अभी बल्किंग कर रहा हूँ। आई एम पुटिंग ऑन 300 ग्राम्स अ फोर्टनाइट, 3 to 400 ग्राम्स अ फोर्टनाइट, मतलब एक महीने में अबाउट हाफ 600-700 ग्राम्स ऑफ वेट, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा नहीं बनना है। आई एम वेरी लीन राइट नाउ, मुझे लीन रहना है। दिस इज व्हाट आई लुक लाइक राइट नाउ। सो आई वांट टू स्टे लीन, बट आई एम कंपीटिंग इन सितंबर। सो आई एम एट दिस मोमेंट रीटा के साथ भी मैं बल्क हो रहा हूँ। अगर मुझे कट करना है तो आई कैन इंक्रीज द जो मिग में लेता हूँ पर वीक, आई कैन इंक्रीज, तो बल्क हो सकती है, सॉरी, और कट हो सकती है। वो मैं कंपटीशन के व्हेन आई गेट क्लोज टू द कंपटीशन आई विल डू दैट। सो शायद जून, जुलाई, अगस्त में। अभी तो ठीक है। सो इवन अगर आप बल्क भी कर रहे हो, यू कैन स्टिल यूज रीटा। वो जो फूड नॉइज है जस्ट कंप्लीटली डिसअपियर्स। वो फूड नॉइज आती नहीं है, वो क्रेविंग जो मैं कह रहा हूँ, दैट कंप्लीटली डिसअपियर्स। दूसरी जो चीज़ है, इफ़ यू आर व्हेन यू आर कटिंग, इट मेक्स इट सो इजी। मैं कट किया हूँ, मैंने आई गॉन टू 4%, 5%, मैन इट इज़ अ नाइटमेयर। पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। you अब सुबह उठते हो, you're hungry, you go spend the whole day hungry and you go to bed hungry. This will eliminate all of it. So ask me if you have any questions. Check it out yourself. I've listed out all the research material in this at the bottom of this video. I've put it up during this video as well. So do your own research. Questions, मुझे पूछ लेना. My Instagram handle is here. Reach out to me, DM me. अगर कहाँ से लेना है, कितना लेना है, प्राइस का है, सब कुछ है. I can tell you. सब फ्री में इंफॉर्मेशन है. But yeah,
give it a shot, do some research. I think it's fantastic. Yeah, good luck with that. Next episode will come out next week. In the meantime, if you like this video, make sure you like it, subscribe, follow, share the word, and I will see you next time.